Good morning, team. Geological Survey of India has said 5.9 million tons of lithium reserve has been found in Jammu Kashmir. This is the first time we have found reserves in India. This will help electric vehicle and medical devices and making in batteries, lithium batteries. And if you take the reserves across the world, India will be ranking 3rd as per the survey. So I think this is very positive for EV boost, which government is planning. So Sonacom is one company which benefits from EV boost. They already have an order book of 23,000 crores. So I think that stock will start to become in limelight. Indigo Paints revenue was higher by 5.95% at 281 crores. Profit after tax 26 crores, 8% higher. Now, even after the stock correcting, we are not very comfortable with Indigo Paints. For the kind of valuation it trades, the company has to grow at 30-35% top line. So that is not happening. 5%, 10% growth will not help the stock sustain higher level. No, I think it is better to buy, Asian Paints or Berger Paints. Even Kansai Nerolac is a better company. So I think that there, some value is there. So I don't think we need to avoid Indigo Paint. BHEL came with the results. They have a huge order book of 1,03,000 crores. But now only they are coming back to profit. Otherwise, they were traditionally making losses in the last 10 years. But slowly they are coming back to profit. But still, sales growth is very anemic. 2.5% growth. It will not take our attention away. So we will avoid it. Chemplast Sanmar came with the results. It is a disaster results. Anyway, we are against any newly listed stock because track record is not there. But at least Sanmar Group, I have been tracking them from 1985. There was companies called Overseas Sanmar, Sanmar Financial, and Sanmar Finance has cheated people in Tamil Nadu and South India. So I've been always against this group. So anyway, the result also has been a disaster. So the revenue was down 18% at 1,189 crores. And profit after tax down by 89% at 27 crores. EPS was 1.72. The stock is still very expensive. They have said many reasons for their bad results. But we need to be careful with this group. Kirloskar brother came with the results. I think this is a very good results. Order book at 2,845 crores. EBITDA margin at 16%. Revenue growth 32% at 957 crores. Profit after tax was higher by 4 times at 88.9 crores. The 9 months EPS is 16 rupees. The company operates in irrigation, water resources, water management, marine, defense, power, oil and gas. So something we like. But if there is a correction, then one can look at this stock. Galaxy Surfactant came with the results. So dividend they are going to give is 18 rupees. That is very interesting. Now revenue was higher by 16% at 1,084 crores. Profit after tax is higher by 133% at 106 crores. Their African business was down 6.4%. The rest of world degrew by 8.9%. Their Indian business and European business has done better. And previously, when the management came on television, they said, our European business is struggling, but contrary, their European business has done very well. Their fatty alcohol prices has come down by more than 50%. That has helped their margin expansion. That is why the profit after tax has jumped. So this is one stock we like because it caters to FMCG for your ingredients for your shampoo, soaps, and many other things. So I think we like. Balrampur Chini, the results has not been so good. But I think any corrective
correction from this stock, we can look at it. Nalco came with the results, again disappointing results from the metal pack. Revenue was down by 12.8% at 3,356 crores. Profit after tax was down by 70%. Not a great results. KFin, again a new listing stock. New listing is something we don't like. Their revenue was higher by 12.1% at 188 crores. EBITDA margin 42.9%. Profit after tax was higher by 78% at 53.3%. But the stock is already overvalued, so we don't think any major upside is there. GRC has come with the results. Garden Reach, it is against a defense stock. There the result was far better. This is very good results. Galaxy is one good results we have mentioned. So GRC revenue was higher by 43.8% at 699 crores. Profit after tax was flat, almost 63 crores, and the 9 months EPS is 15. A dividend they are going to pay is 5 rupees 50 paisa. Bannari Amman Sugar, again good results. Revenue was higher by 30%, 932 crores. Profit after tax was higher by 38%. At 40.85 crores. EPS for 1 quarter was 32 rupees, and for 9 months EPS is 74. The stocks trade attractive. JM Finance also came with the results. They have a loan book of 15,234 crores, and income was slightly down at 946 crores. Profit after tax was down by 8% at 240 crores. GNPA is slightly down at 3.6%. Net NPA is also slightly down at 2.23%. And book value at 84. I think the stock trades near book value, so we can look at it. Metropolis, again a disappointing results. Gokuldas Export, again not a great results, but profit after tax has improved in Gokuldas Export. Purvankara came, it was a differentiated results, something very unique in Purvankara. Sales was at 786 crores. They say that is the highest ever sales they have done for a quarter. Collection 621 crores. Revenue was higher by 67% at 410 crores. Profit after tax is 21 crores. They are talking about their total unsold inventory, how much they have to build, how much is a possible sale. Possible sale in next few years will be 12,000 crores, and after selling, buying everything, they say surplus of 6,774 crores will be there. Today their debt, which has come down, is 2,135 crores. A unique stock, we have not tracked it. Maybe we will again look at this stock again. Vishnu Chemical came with results. On the face, results got better at this point of time. And they are saying their total capacity in barium chemicals will be scaled up to 90,000 tons per annum in FY24. Currently, this year, last year, January, it was 40,000 tons per annum. So they say that will start to improve. PB Infotech came with the results. The loss is reduced, but revenue has grown at 66%. So with that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. जैसे हम देखेंगे फ्राइडे इवनिंग में जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी लिथियम की डिपॉजिट मिली है जो कि 5.9 मेट्रिक टन की है. अगर ये हम देखेंगे तो इंडिया की वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट डिपॉजिटरी हो सकती है. सो इसके चलते हम देखेंगे जो हमारे ईवी का जो मिशन है वो आगे यहाँ से बढ़ता हुआ आगे दिख रहा है, क्योंकि ईवीज का लिथियम का मेजर जो यूज है वो फैक्ट्रीज में आता है, मेडिकल डिवाइसेस में आता है. सो ओवरऑल हम देखेंगे तो सोना कॉम्स्टॉक जैसे स्टॉक्स को लाइमलाइट में वापस आ सकता है जो थोड़ा चाम खो रहा था ईवीज के ड्रॉबैक के चलते. सेकेंडली हम देखेंगे भेल के रिजल्ट है. ऑर्डर बुक देखा जाए तो 1.33 लाख करोड़ का था. प्रॉफिट अगर देखा जाए तो मार्जिनली था, जो पहले लॉस पोस्ट करते थे अभी उन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया. सेल्स ग्रोथ एकदम फ्लैटिश या बोलते बहुत ही कम थी 2.5% की.
नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिको पेंट्स के रेवेन्यू देखा जाए तो 6% से ग्रो हुआ, जो कि 281 करोड़ का। पैट देखा जाए तो 26 करोड़ का है, जो कि 8% का है। वैल्यूएशन देख रहे तो अभी भी स्ट्रेस्ड है, कंफर्टेबल वैल्यूएशंस पे नहीं है। जो इस भाव पर चल रहा है उसको जो रेवेन्यू का रन रेट होना चाहिए वो 30 to 35% के आसपास आना चाहिए, बट ये 6 और 8 तक पे चल रहा है, तो स्टॉक अभी भी यहाँ से मौजूदा भाव से और गिरावट देखने को मिल सकती है। कैंपला सनमार्क के भी रिजल्ट्स बहुत ही खराब आए थे और नया लिस्टिंग स्टॉक है। जैसे हम स्टॉक को देख रहे तो 1985 से ट्रैक कर रहे हैं, बट ओवरऑल इनके सल्फार फाइनेंस से जो उन्होंने साउथ इंडिया में चीटिंग भी की थी, और वैसे मतलब बिजनेस ओवरऑल इनका अच्छा नहीं है। तो रेवेन्यू देखा जाए तो 18% से डाउन था, जो कि 1089 करोड़ का है। पैट देखा जाए तो 89% डाउन था, जो कि 27 करोड़ का है। ईपीएस देखा जाए तो 1.72 का। किर्लोस्कर ब्रदर्स के भी रिजल्ट्स देखेंगे, ऑर्डर बुक देखा जाए तो 2840 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 16% के आसपास का है। रेवेन्यू देखा जाए तो 32% से ग्रो, जो कि 757 करोड़ का है। पैट देखा जाए तो 4x ग्रो हुआ, जो कि 88.9 का है। ईपीएस देखा जाए 9 मंथ्स का 16 रुपए के आसपास का। बेसिकली ये जो कमी है इरिगेशन, मरीन, डिफेंस, पावर, ऑयल एंड गैस जैसे क्षेत्रों में काम करती है, और हमें लगता है अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो ये स्टॉक पर हमें फोकस रखना चाहिए, रैपिडली करना चाहिए। अच्छे रिजल्ट्स में देखा जाए तो गैलेक्सी सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। डिविडेंड देखा जाए तो 18 रुपए का डिविडेंड दिया गया है। रेवेन्यू देखा जाए तो 16% से ग्रो हुआ, जो कि 1084 करोड़ का। पैट पे भी 133% का जम देगा, जो कि 106 करोड़ का। इनका यहाँ पे मेन जो रिजल्ट्स में देखा जाए तो अफ्रीकन बिजनेस में थोड़ा सा हमें देखिए, जो कि 6.5% के आसपास का। वर्ल्ड में भी हमें डाउनफॉल ही देखा, जो कि 9% है। सेकेंडली इंडिया और यूरोप ने बेटर किया है बाकी सारे रीजन से भी, और जैसे अटकलें चल रही थी यूरोप का बिजनेस अच्छा नहीं आ सकता, बट यूरोप के नंबर्स बेटर ही थे बाकी वर्ल्ड से। इनका बेसिकली जो मेन रॉ मटेरियल जो कि फैटी अल्कोहल है, उसका अगर हम देखा जाए तो 50% का मार्जिन, 50% प्राइस पे डाउनफॉल आया, so उसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन हुआ गया है। और ये मेजर क्रूड प्रोडक्ट है जो कि एफएमसीजी की शैम्पू, सोप्स, ऑयल्स में लगता है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं इसके चलते हमें फैट में भी बूस्टअप दिखा। बलरामपुर चीनी के भी नतीजे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो हमें स्टॉक को फोकस रखना चाहिए। नार्को के भी रिजल्ट देखे, रिजल्ट बेहद ही डिसअपॉइंटिंग थे। रेवेन्यू 12% नीचे था, पैट 70% नीचे गिरा गया था, तो ओवरऑल रिजल्ट बिल्कुल बेहद आ, का कार्य फिनटेक के भी रिजल्ट देखेंगे। रेवेन्यू देखा जाए तो 12% है, तो 188 करोड़ का। अगर ऑर्डर बुक देखा जाए तो 42.9% की थी। पैट देखा जाए तो सॉरी एबिटा मार्जिन 42.9% का था। पैट देखा जाए तो 73% का है। ओवरऑल देखे तो अभी भी वैल्यूएशन में स्ट्रेच है, सो ये स्टॉक को अभी भी हमें रिटायर से ऑफ रखना चाहिए। जीआरएसी के नतीजे ओवरऑल बेटर थे। रेवेन्यू देखा जाए तो 44% का जम देखा है, जो कि 700 करोड़ के आसपास का है। पैट देखा जाए तो 63 करोड़ का। ईपीएस 15 रुपए का, डिविडेंड इन्होंने 5 रुपए का 50 पैसे का डिक्लेयर किया। बनारी शुगर्स के भी रिजल्ट देखिए, रेवेन्यू 30% आया था, प्रॉफिट 38% के आसपास था। ईपीएस देखा जाए तो 32 रुपए का, और 9 मंथ्स का देखा जाए तो 64 रुपए का। जीएम फाइनेंशियल के भी नतीजे देखेंगे। लोन बुक देखा जाए तो 15,234 करोड़ का लोन बुक है। इनकम में थोड़ी सी हमें फॉल देखी, जो कि 946 करोड़ की। पैट भी हमें थोड़ा सा सोच देखा गया है, जो कि 8% नीचे 240 करोड़ का। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी फॉल देखा, जो कि 3.6 और 2.2 रिस्पेक्टिवली। बुक वैल्यू देखा जाए तो 84 की, और ये बुक वैल्यू के आसपास है, तो थोड़ा हम इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। मेट्रोपोलिस के भी रिजल्ट बेहद ही खराब थे, और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं दिखे। एक थोड़ा सा ऑफ रिजल्ट में देखा जाए तो पूर्वांक के भी नतीजे थोड़े से बहुत अच्छे हैं। सेल्स देखा जाए तो 786 करोड़ का है। हम स्टॉक को इतना ट्रैक करते नहीं थे, बट अभी थोड़ा सा लाइनलाइट में आ रहा है, और इन्होंने कहा कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है इनका। इनका कलेक्शन देखा जाए तो 621 करोड़ का। रेवेन्यू में 67% का जम दिखा है, 410 करोड़ का। पैट 21 करोड़ का। इनकी जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, वो पॉसिबल सेल्स है, वो बोलते हैं 12,000 करोड़ की। उसमें से अगर सारा नेट ऑफ करेंगे तो हम देख रहे हैं सरप्लस 6,774 करोड़ के आसपास का आएगा। इनका पास जो डेट है वो 2135 करोड़ का, वो कहते हैं वो भी से रिड्यूस करेंगे। विष्णु केमिकल्स के भी रिजल्ट नतीजे अच्छे थे। इनकी करंटली जो कैपेसिटी है वो 40,000 टन से बढ़ा के 90,000 टन तक कर दी गई है। बीएमएल को भी एक ऑर्डर मिला है 377 करोड़ का। सप्लाई करेगी 118 ट्रैक वर्थ माइन फ्लो जो अर्जुन एमटीटी है, ये सप्लाई से कंप्लीट हो जाएगी जनवरी 2026 तक। थर्मैक्स ने भी एक ऑर्डर जीता है 251 करोड़ का, जो कि रिनोवेट करेगा, मॉडर्नाइज करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पैकेज, जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर करने के लिए। महिंद्रा के भी रिजल्ट देखेंगे, ब्रॉडली देखेंगे इनलाइन थे और कंसेंसस के एस्टिमेट के आसपास ही थे। रेवेन्यू देखा जाएगा 41% से ग्रो हुआ, जो कि 32% वॉल्यूम ग्रोथ में देखा गया। मैनेजमेंट भी आईपीए के 10% का ग्रोथ हमें दिख रहा है डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, जो कि वॉल्यूम्स आएंगे FY23 में। और कंपेयर करेंगे तो गाइडेंस में 5 to 7% की ग्रोथ और लग रही है। जो उनकी नई लॉन्च XU400 उसका भी उन्हें बुकिंग्स 15,000 यूनिट्स के आसपास आ चुकी है। और टोटल ओपन नेट बुकिंग देखी जाए तो 2,67,000 की नेट बुकिंग्स है, जो कि ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग इनकी डिमांड के लिए। सो अभी करंटली हमारी 15x वैल्यूएशन के साथ अट्रैक्टिव है, और रेटिंग कहते हैं बाय रेटिंग 1600 के वैल्यूएशन के साथ।
इन्वेंट्री के भी नतीजे देखेंगे, रेवेन्यू 233 करोड़ के आसपास का था, जो कि 19% हायर था। ग्रॉस एआरआर और ऑक्यूपेंसी भी की पोर्टफोलियो थे जो कि 19% के आसपास था। ऑक्यूपेंसी देखा जाए तो 67% थी, जो कि 140 में ऊपर है, और एडीआर पे देखा जाए तो 537 अप है, जो कि 17% के आसपास है। और रेवेन्यू अगर पार पे देखेंगे तो 387 करोड़ के आसपास है, जो कि 19% हायर है। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 54% है। नेक्स्ट हम देखेंगे एबीबी इंडिया के सेल्स अगर देखेंगे, ग्रोथ अगर पार्ट ग्रोथ देखा जाए 16% का है। सेल्स अगर एबिटा देखा जाए तो 97% है, और सेल्स देखा जाए 98% है। सिग्निफिकेंट बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे, जो कि एस्टिमेट से भी हमारे अच्छे थे। ऑर्डर इंटेक अगर देखा तो 4% से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर पे, बट डिक्लाइन हुआ है 11% क्यूओक्यू पे। ऑर्डर इंटेक देख रहे तो 10,000 करोड़ से आसपास सरपास कर चुका है, और ऑर्डर बुक है जो 32% से ग्रो हुआ, जो कि 6,468 करोड़ का है। बिट्टा देखा जाए तो 15% के आसपास का है। ग्रॉस मार्जिन भी देखा जाए तो बहुत ही अपबीट है, और एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं जो कमोडिटी क्लासेस में डिक्लाइन हो रही है, इसको चलते इनकी प्राइसिंग में भी स्ट्रेंथ है। ईडब्ल्यूएल जो एल्डोर वेल्डिंग, उनके भी नतीजे अच्छे देखेंगे। रेवेन्यू देखा जाए तो 1985 198 करोड़ के आसपास का। एबिटा देखा जाए तो 24 करोड़ के आसपास का है, और जो कि 46% ग्रोथ है। पैट देखा जाए तो 16 करोड़ के आसपास का, जो कि हेल्दी प्रॉफिट देखा गया 55% के आसपास का। और ईडब्ल्यूएल देखा जाए सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है डोमेस्टिक वेल्डिंग इंडस्ट्री में। इनके पास मार्केट शेयर 16% का है, और कंज्यूमर स्पेस में 8% का मार्केट शेयर है। लास्ट में हम देखेंगे अशोक बिल्डॉन की मार्जिन डिक्लाइन देखेंगे क्वार्टर पे 7.5%। जो रेवेन्यू देखा जाए तो 15.6 बिलियन की, जो कि 41% का जंप दिखा गया, जो कि 22% हायर है। एबिटा देखा जाए तो 1200 करोड़ के आसपास का, जो कि 3% था, 5% ऊपर है। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 7.5% है, जो कि 10.9% ईयर ऑन ईयर है। और एडजस्टेड देखा जाए तो 0.67 बिलियन के आसपास का है। Technical and derivative updates. So on Friday's session, we had witnessed a range bound session on the index, and index has closed at 17,856 level with minus 36.95 points down. And on the sectorial front, we had seen that realty, PSU bank, and auto has shown some strength, whereas IT and oil and gas were looking under pressure. And on the weekly chart, there was a doji candlestick chart pattern is formed in the index. So either side of the breakout or breakdown may likely to see a directional movement in this. However, in the India VIX, we had seen that India VIX is at 12.74 level, which suggests a stability in volatility, and we are not likely to see much volatility in the market, and either side directional movement will give a continuation of the direction. And for the coming week, 17,300 and 17,500 may act as a demand zone, whereas 18,000 will act as a resistance for the coming trading sessions. However, on above 18,000, we may likely to see a further upside movement. On the Bank Nifty front, Bank Nifty is also traded with a range bound session and closed at 41,599, 559.40 with a marginal positive for 5.10 points. And the advanced decline ratio, we had seen that there was a little bit strength in the PSU banks, whereas ICICI Bank and Axis banks were trading in negative. For the Bank Nifty, we in the previous week we had seen that Bank Nifty has traded between 41,000 and 42,000 level. So it is like it is trading in the range bound zone. But however, closing above 42,000 level, we'll see a further upside moment in the Bank Nifty as well. So for the coming week, in both the index, there will be a bullish view. The view will be remain bullish, and on the every decline we may approach a buy on decline strategy. Now on the derivative front, Nifty futures added fresh short position to the tune of 3.52% on addition of 3.99 lakh shares, and the PCR declined from 1.08 to 1.05 level. The major additions were seen at 18,000 call option by 64.85 lakh shares and 18,200 call by 46.99 lakh shares, while on the put front option, 17,800 put by 65.26 lakh shares.
Bank Nifty witnessed short covering to the tune of -5.78% on decline of 1.62 lakh shares, and the PCR declined from 0.96 to 0.87 levels. The major addition was seen at 41,500 put by 25.96 lakh shares and 41,500 call by 23.76 lakh shares and 42,000 call by 17.77 lakh shares. And on the FII statistics, FII shorted by minus 10,486 contracts, stands at minus 1.05,540 contracts, and long short ratio stands at 17.75%. And for the stocks which we can see for the coming trading session are Charlotte Hotels and Indian Hotels. So thank you everyone. That's it from my end. I'll further hand over to Vishal sir for the further updates. Yeah, good morning, sir. Good morning, team. Results season, and I'll discuss a couple of results which came out on Friday and over the weekend. First, starting up with the ABB. So ABB has reported a pretty strong set of numbers. I mean, if you look at their sales was up by 16%, EBITDA margin has expanded, and EBITDA was almost 100% increase on Y&Y basis it has seen. And if you look at the margins were robust at around 15%. Now, gross margin level, there was a strong beat, and company has benefited from the weakness in the commodity prices, and company is holding up overall pricing of its product. In terms of inflow, again, if you look at company order intake surpassed in this particular year. This is a calendar year company, so they have surpassed 10,000 crore in CY22. Overall order book remain strong. So ABB, overall commentary again in terms of what exactly they reported numbers and how has been the order book shaping up. So overall, it bodes well for the company and it's positive on ABB India. Next is on Lemon Tree. So Lemon Tree, we have a buy rating on the stock, and company has reported a strong set of revenue growth, and if you look at revenue was up by 62%, EBITDA was almost 100% up, and there has been a margin expansion in Lemon Tree. So if you look at other operational parameter, whether you talk about the ADR or RevPAR, all of them, they have grown by about 17 to 18%. And company has expanded its presence by signing of a couple of new hotels in new cities, which is 7 new hotels in the cities they have added up. So all in all, I think a strong set of results from the company, and company is a con call. But yes, the bias remain in terms of we have a buy rating on the stock. Next is on M&M. M&M, the results were broadly in line with what the street was estimating. Company, if you look at from a profitability point of view, company has reported the highest ever quarterly standalone consolidated revenue growth of around 41% on Y&Y basis, and that is operationally 32% volume growth the company has seen. If you look at company is guiding 10% kind of growth in domestic tractor industry in FY23, which is the fourth quarter of this year. And all in all, I think if you look at strong set of numbers were pretty strong, and I think the positivity which has been there in M&M, so we expect this to be continued in terms of stock performance. Next is on Adore Building. So Adore Building has reported numbers were from their revenue and EBITDA point of view, they reported a pretty strong set of numbers. Revenue was up by 14%, and they reported a EBITDA growth of around 46% Y&Y basis, and PAT was up by equal number of 55%. Revenue growth was seen across all the segments of Adore Building and consumable equipment, project finance, and its company is expected to benefit from a promising prospect from the domestic market driven by government infra push. Stock valuation, again, if you look at it, 15 times. So that's on the consensus estimate. Again, it's not that expensive as a stock. Next, I'll discuss a couple of construction stock results. Most of them, they reported a weak set of numbers. And if you look at Delhi Buildcon, the numbers were lower. There has been a volatility in EBITDA margin for the company, and that has continued even in this quarter. And again, in terms of outlook, I think how the margins panned out, so that's a key element to watch. But I think if you look at within the construction space, our recommendation is to have we have a positive view on HG Infra, we have positive view on PNC Infratech, and again PSP and Ahluwalia.
In terms of next set of results, Ashoka Buildcon reported numbers. So again, I think what we understand is the revenue growth was pretty strong, but again, the margin miss has been there. And probably, I mean, I'll read it like, a weak set of results from Ashoka Buildcon. Next, I mean, I'll discuss couple of news or media update. One is like, BEML, they received an order of around 378 odd crores, and this for the supply of 118 trucks. And the supply is expected to commence from January 26. Overall, this is positive for BEML. Next is last thing from my side is on Thermax. So Thermax has received an order of around 52 odd crores. That is to renovate and modernize electrostatic precipitator package from Indian public sector company. So it bodes well for Thermax. And just to give one last comment, that's on cement. So cement, I think there has been a positivity in terms of like GST cut being around the corner. So as per media reports, 18th February is the date when the GST council will be meeting, and some bit of announcement we are expecting. Given like FM has again commented that GST cement GST they will be doing in this particular policy in this particular meet.